Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's बच्चों आज पढ़ो electrolytes and electrodes. तो रात पर अवश्य कि liquids किस पोजीशन conduct electricity करां क्या हम electricity conduct करां कि ना आज पर electrolytes electrodes क्या कहते हैं क्योंकि liquid solution या अगर कहीं liquid electricity conduct करां आश ताच में अच्छा electrolyte सो liquid solution या सो liquid यम यूस अलाउ करां आश बिजली पानस मज तथ वन यह गो electrolyte मसलन नमो नून तो बे त्रावस आब यानी आबस मज त्राव नून यह बने ना कॉमन सॉल्ट solution. This is called electrolyte. Why? Because it conducts electricity. It allows electric current to pass through it. ठीक कह तो liquid या liquid solution मे मज electric current आस पास गसान तथ वन यह गो electrolyte. ठीक तो यह sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide is base. Sodium hydroxide plus ab, it becomes a sodium hydroxide solution. It is also an electrolyte. Why? Because it allows electric current to pass through it. Then we say it is an electrolyte. Electrolyte मतलब गए आत्मा से आसान तिल ions. जो मराठ में electrolytes मतलब liquid में कुंती liquid में बिजली से पास गसान तथ में यूस बिजली हुन यूस electric current carrier आसान तुम चीज़ बना ions. ठीक these ions can be positively charged, they are negatively charged. ठीक सदा positively charged negatively charged. ये लग atom gain च करा electron इस बना positively इस बना इस करा acquire negative charge. ये लग atom lose च करा electron इस करा acquire positive charge. ठीक गो electrolytes में कुछ करा current carry ions. ठीक इसी flow of ions च आसा यह च करा conduct electricity. ये मतलब यह कान liquid liquid में ion च करा flow ये मज पकड़ा electric current. गो उसमें तो electrolytes में कैसा था? In electrolytes, you have ions. You have ions which are responsible for carrying the electricity. But in solids, you have electrons. But in liquids, you have ions. You see a solution of acid या base या salt is electrolytes. मतलब इसमें H2SO4, diluted sulfuric acid. Diluted H2SO4 इस्तेमाल अक्सर बैटरियन में. Why? Because it is considered as a strong electrolyte. If they put in base the salt, when amam much bijli ka pass, they are called as electrolytes. Which electrolytes are very cosmic. Strong electrolytes, weak electrolytes. ठीक तम liquid solution यम पान में असल बिजली करा असल पट conduct. तम liquid solution यम पान में असल करा असल पट बिजली conduct. यानी they allow the electric current to pass through them quite easily, quite comfortably. They are called as good conductors of electricity. Why? Because they contain a lot of ions in it. For example, H2SO4 solution. मतलब इसमें कुछ ये तेज़ाब इसे इस्तेमाल बैटरी में या hydrochloric acid solution या nitric acid solution या sodium hydroxide solution अमन से इसमें इमोशनल strong electrolytes. Why? Because they are very good conductors of electricity. क्या जब चिक असल पॉइंट करा पानस में बिजली करा एलो पानस में सकनस. I don't find any proper Kashmiri word for this, so I would just tell you तुम मतलब वो चीजें तुम वो electrolytes जिनमें अच्छी तरह से बिजली चलती है या बिजली का करंट दौड़ता है उन्हें हम बोलते हैं we call them as good conductors of electricity. ठीक for example H2SO4, that's why it's used in batteries, then hydrochloric acid, sodium hydroxide and others. ठीक why? Because these, now we can say the strong electrolytes are those electrolytes which allow or which are good conductors of electricity. Now you have one more which is called as weak. Why are they, first of all, why are they called as strong electrolytes? Why are they good conductors of electricity? Why? Because they contain a lot of ions. So the number of ions decides whether the electrolyte is a strong conductor of electricity or weak. If the number of ions is higher, it will be a good conductor of electricity. In contrast, you have weak electrolytes.
these are यम गए तुम electrolytes which contain lesser number of ions, जिनमें ions की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इनमें इनमें इलेक्ट्रिक करंट होती है लेकिन कम. So we call them as weak electrolytes. So we electrolytes are those electrolytes which conduct electricity to a lesser extent. यम जन वारिया कम तादाद में आसान बिजली पावर में कनेक्ट करान. मिसाल इस्तेमाल विनेगर एसिड सिरक या इस्तेमाल लेमन जूस सिट्रिक एसिड तो या टेप या नमो शुद्ध टेप वाटर नमो या रेन वाटर नमो मतलब सिर्फ आब होतन. We call them as weak electrolytes because they conduct electricity to a lesser extent, and the reason is the number of ions in such solutions or in such liquids is lesser as compared to the strong electrolytes. Then you have one more thing which is called as electrode. What's electrode? Electrodes basically are solid electrical conductor. यम इलेक्ट्रिक करंट आसान तो नेरान तो मिसाल इस्तेमाल ड्राई सेल इसे रिड्यूस लगाना सेल इस तरह होती है. ठीक, इसके यहाँ पर होता है पॉजिटिव और यहाँ पर होता है नेगेटिव. ठीक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड क्योंकि इसमें क्या होता है, इट्स ए कलेक्टर. इसमें इलेक्ट्रिक करंट आता भी है, इंटर भी होता है और निकलता भी है. दैट्स व्हाई गो सो चीज सो मेटल इलेक्ट्रिक कलेक्टर यथ मज करंट आसान ते आस नेरान ते आस वन वी कॉल इट एन इलेक्ट्रोड. जैसे आपके पास ड्राई सेल है जो आप रेडियो में इस्तेमाल करते हो, दैट्स एन इलेक्ट्रोड. दैट्स एन इलेक्ट्रोड. यू सी इलेक्ट्रोड इट्स आल्सो इट हैज आल्सो टू टाइप. आ गोस एनोड बैक गोस कैथोड. इसी एनोड गो इलेक्ट्रोड यूज दन इस दक्षिण साइड मतलब उसके होता है ना एक साइड में प्लस एक में माइनस. यूज पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड यानी यूज पॉजिटिवली चार्जड एंड of the dry cell is called as anode. ठीक, you see negatively charged end of the battery is called as cathode. ठीक, so you have two types of electrodes. One is anode. Anode means the positive terminal of the battery, and cathode means the negative terminal of the battery. Like you can see here, this is the positive end, this is the negative end.